तो आज से हम लोग रिविजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेकेंड यूनिट से, which is antibiotics and chemotherapeutic agents. So antibiotics are substances produced by microorganisms which either kill or inhibit the growth of other microorganisms. एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस होता है. These antibiotics can either kill or can inhibit the growth of microorganism. Either ये kill कर सकते हैं और माइक्रोऑर्गेनिज्म को, और उनके ग्रोथ को रोक सकते हैं. And antibiotics are natural substances. Second is chemotherapeutic agents. Chemotherapeutic agents are natural or semi-synthetic or synthetic chemicals. So chemotherapeutic agents are either naturally derived agents, or semi-synthetic or completely synthetic chemicals, and they are used in treating bacterial and other microorganism infection. और इनका यूज किस लिए होता है? To treat bacterial and other microorganism infection. According to mode of action, antibiotic can be divided into two types based on the mode of action. Antibiotic को दो टाइप में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज बैक्टीरियोसाइडल एंड अनदर इज बैक्टीरियोस्टेटिक. So first we will see bacteriostatic. Bacteriostatic are the antibiotics which inhibits the growth of microorganism. जो microorganism को ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, ठीक है. तो इसका एग्जाम्पल, इस पे बैक्टीरियोस्टेटिक्स के एग्जांपल्स में है. फर्स्ट इज सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकल. Okay, so these are the example of bacteriostatic antibiotics. Now the second one is bactericidal. Bactericidals are the antibiotics which destroys or kills the microorganism. Okay, examples are penicillin, aminoglycosides, cephalosporin. These are the examples of bactericidal. So this bacteriostatic and bactericidal classification was based on the mode of action of antibiotics. Now the another classification is based on the range of effectiveness against microorganism. Okay, so the first classification based on the range of effectiveness against microorganism is broad spectrum, and the second one is narrow spectrum. So first we will see broad spectrum. Broad spectrums are antibiotics which acts against wide range of microorganisms. Means basically broad spectrum antibiotics वो antibiotics होते हैं जो कि wide range of microorganism के against work करते हैं. Like tetracycline examples. Example of broad spectrum is tetracycline and chloramphenicol. Next category is narrow spectrum. Narrow spectrum antibiotics are those antibiotics which acts against a limited range of microorganism. जो किसके एक लिमिटेड रेंज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क करते हैं, वो आता है इन द कैटेगरी ऑफ नैरो स्पेक्ट्रम. तो इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन. ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर द एग्जांपल्स ऑफ नैरो स्पेक्ट्रम. Now the third classification is based on the chemical structure of antibiotics. Okay, based on the chemical structure of antibiotics, the antibiotics are divided into sulfonamide, beta-lactam antibiotics. Example of beta-lactam antibiotics are penicillin, cephalosporin, aminoglycoside. Next category is first category is sulfonamide. Second is beta-lactam antibiotics.
Third is aminoglycoside. Example of aminoglycoside is streptomycin, gentamicin. Okay. Next category is tetracycline. Next category is nitrobenzene. Next category is macrolide antibiotics. Example of macrolide antibiotics is erythromycin. Next category is 4-quinine uh, quininols. Example is nalidic acid. Nicotine acid derivatives also comes under the category of chemical structure, classification based on the chemical structure. Next is net, nitromidazole. Nitromidazole. So the example under nitromidazole is metronidazole and tinidazole. Okay. Next comes the category of diaminopyrimidines और इसमें एग्जांपल्स क्या आएगा ट्राइमिथोप्रिम ट्राइमिथोप्रिम and pyrimethamine. Next category is polypeptide. And the example of polypeptide is polymyxin B. These are the antibiotics based on the chemical structure or the classification of antibiotics based on the chemical structure. Now we will see what are the adverse effects of chemotherapeutic agents. So before starting this, once we will again repeat what is chemotherapeutic agent. Chemotherapeutic agents are natural or semi-synthetic or synthetic chemicals used in treating bacterial and other microorganism infection. Okay, now we will see the adverse effect of chemotherapeutic agent. First is toxic effect. It may be in the form of local irritation or abscess formation in the site of injection or organ toxicity like liver and kidney damage, bone marrow suppression. So, in the adverse effect due to chemotherapeutic agent, the first is toxic effect. और टॉक्सिक इफेक्ट में आप क्या देखोगे कि आइदर लोकल इरिटेशन हो सकता है, ठीक है, जो साइट ऑफ इंजेक्शन है जहां से हम इंजेक्ट करें कीमोथेरेपेटिक एजेंट को वहां पे लोकल इरिटेशन हो सकता है, एब्सिस फॉर्म हो सकता है. ओके, देन ऑर्गन टॉक्सिसिटी होता है और ऑर्गन टॉक्सिसिटी होने के चांसेस है और ऑर्गन टॉक्सिसिटी में आप देखोगे लिवर एंड किडनी डैमेज हो सकता है और इन सम सर्टेन केसेस बोन मैरो डिप्रेशन भी हो सकता है और सप्रेशन. ठीक है, मतलब बोन मैरो का जो फॉर्मेशन है वो सप्रेस हो सकता है, मतलब वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा बोन मैरो. ठीक है. Next adverse effect of chemotherapeutic agent is hypersensitivity reaction. Okay, chemotherapeutic agents can produce hypersensitivity reaction in the form of mild rashes to severe anaphylactic shock in susceptible person. Example sulfonamides and penicillin. देखो इसका क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है कि ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बॉडी में फॉर्म कर सकता है. तो इस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, आइदर माइल्ड रैशेस फॉर्म हो जाते हैं, बॉडी में रैशेस फॉर्म होने लग जाता है, या तो फिर वो माइल्ड होते हैं और सीवियर. ठीक है, किसी किसी केस में आप माइल्ड रैशेस देखोगे और किसी किसी केस में सीवियर रैशेस दिखते हैं. ओके, दैट कैन लीड टू एनाफाइलेक्टिक शॉक. तो मोस्टली हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कौन से पेशेंट में हो सकता है, जिनको हम मेडिसिन दे रहे हैं सल्फोनामाइड एंड पेनिसिलिन. अगर हम पेनिसिलिन और सल्फोनामाइड दे रहे हैं तो आप इस तरह का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देख सकते हो. इसलिए पेनिसिलिन देने से पहले या सल्फोनामाइड देने से पहले हम एक पैच टेस्ट करते हैं.
एक टेस्ट करते हैं, मतलब उसका सेंसिटिविटी रिएक्शन टेस्ट करते हैं ना, कि पेनिसिलिन को बहुत कम डोज में इंसर्ट करके अराउंड 1 आवर और हाफ एन आवर ऑब्जर्व करते हैं कि कोई रिएक्शन तो नहीं आ रहा है, और अगर रिएक्शन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब पेशेंट इज नॉन रिएक्टिव, नॉन हाइपर सेंसिटिव टुवर्ड्स पेनिसिलिन, और अगर रिएक्शन आ रहा है तो आप पेनिसिलिन नहीं इंसर्ट कर सकते हो ऐसे पेशेंट को। नेक्स्ट adverse reaction is super infection. Now, in super infection, what happens? Appearance of a new infection with when treating some other infection. Okay, when with chemotherapeutic agent, example during treatment of bacterial infection, a fungal infection can appear due to decreased bacterial flora of the body. तो देखो सुपर इन्फेक्शन मतलब ऐसा इन्फेक्शन होता है कि आप ट्रीटमेंट किसी एक इन्फेक्शन के लिए ले रहे हो और दूसरा इन्फेक्शन हो गया। ओके, इसमें सबसे कॉमन क्या है, अगर आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर रहे हैं तो आप देखोगे कि फंगल इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है बट फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज सुपर इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन की डेफिशिएंसी होने लग जाती है हमारी बॉडी में। इन विटामिन डेफिशिएंसी फर्स्ट वी विल सी द chemotherapeutic agents destroy bacterial flora of our body which synthesize vitamin B complex group and vitamin K. This can lead to deficiency of these vitamins. तो vitamins deficiency कैसे होगा? जो chemotherapeutic agents है या जो antibiotics है वो क्या करते हैं, बेसिकली हमारे बॉडी में अ, मतलब अगर बैक्टीरिया जो बॉडी में जो नॉर्मल एक फ्लोरा होता है, राइट, बैक्टीरिया होने का एक फ्लोरा होता है, आपको इन्फेक्शन या किसी भी इंडिविजुअल का इन्फेक्शन तब होता है कि उस फ्लोरा से ज्यादा बैक्टीरिया हो जाए, इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, या इन्फेक्शन हो ही जाता है। बट इन्फेक्शन अगर बैक्टीरिया का काउंट जो नॉर्मल फ्लोरा है उससे कम हो गया तो क्या होने के चांसेस होते हैं? फर्दर फर्दर फ्लोर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल फ्लोर नॉट इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरियल फ्लोरा जो नेचुरली हमारे बॉडी में जितना बैक्टीरिया होना चाहिए उतना अगर नेचुरली अकर कर रहा है तो क्या होता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। किसी और के इन्फेक्शन जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया ये सब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज विटामिन डेफिशिएंसी। बॉडी में विटामिन के डिफिशिएंसी होने लग जाता है। ठीक है, विटामिन डेफिशिएंसी में आप क्या देखोगे कि विटामिन लाइक बी कॉम्प्लेक्स इसका डेफिशिएंसी होने लग जाता है, के विटामिन के का डेफिशिएंसी होने लग जाता है, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के सिंथेसिस में ना बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर बैक्टीरिया का ही पूरा देखो, इसमें क्या होता है ना, एक तो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है, एक यूजफुल बैक्टीरिया होता है हमारी बॉडी के लिए, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है। तो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो भी हमारे बॉडी में रहता है ना, तो वो हमारे डाइजेशन में या फिर किसी और कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें हेल्प आउट करता है, क्योंकि नेचुरली हमारे बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा है और हमको कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है। बट जो जो बैक्टीरिया डिजीज कंडीशन कॉज करते हैं दे आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स। ठीक है, उनको पैरासाइट्स बोला जाता है। तो अगर जब हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स तो ये डिटरमाइन नहीं करेगा ना कि कौन अच्छा बैक्टीरिया कौन खराब बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए। एंटीबायोटिक विल वर्क ऑन बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया विच आर यूजफुल फॉर आवर बॉडी दे ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के का डेफिशिएंसी हो जाता है बॉडी में। ओके, नाउ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल ड्रग। एक एक इंडिविजुअल ड्रग्स का टॉक्सिक इफेक्ट क्या क्या है वो देखेंगे। इंडिविजुअल एंटीबायोटिक्स और ग्रुप में हैव देयर ओन स्पेसिफिक टॉक्सिक इफेक्ट। फर्स्ट इज क्लोराम्फेनिकल। क्लोराम्फेनिकल क्या करता है? क्लोराम्फेनिकल बोन मेरो डिप्रेशन कर देता है। अगर बोन मेरो में डिप्रेशन होना स्टार्ट हो गया
अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है बोन मैरो, तो क्या होगा कि रेड ब्लड सेल का काउंट रुक जाएगा, या फिर ब्लड का हमारा सप्लाई, ब्लड का जो रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से पूरा फुलफिल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन की वजह से क्या होता है, हमारे जो दांत है वो खराब होने लग जाते हैं, और बोन में बोन का डिपोजिशन जो है वो भी खराब होने लग जाता है। नेक्स्ट इज एमिनोग्लाइकोसाइड आर टॉक्सिक, ऑटोटॉक्सिक। जो एमिनोग्लाइकोसाइड होते हैं, नेक्स्ट, वो क्या होता है, ऑटोटॉक्सिक होते हैं, मतलब कान खराब हो सकता है इंसान का, हो सकता है कि इंसान पूरी जिंदगी कुछ सुन ना पाए। So now we will, this was a brief introduction come definition come classification come adverse effect of antibiotics and chemotherapeutic agents. Now we will see the penicillin, the very first antibiotic, that is penicillin. The penicillin were the first antibiotics to be isolated and used clinically in 1941. ठीक है, जो पेनिसिलिन है वो सबसे पहला डिराइव्ड पेनिसिलिन है। ओके, एंड इसका यूज कब हुआ, 1941 में, फर्स्ट यूज। इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम फंगल पेनिसिलियम नोटेटम। इसको आप पेनिसिलिन को ना, जो है ये पेनिसिलिन, उसको जो फंगल पेनिसिलियम नोटेटम होता है उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। ये जो पेनिसिलिन है वो एंटीबायोटिक है। ओके, next comes all penicillin contain a beta-lactam ring in their structure, which is responsible for their antibacterial activity. Cephalosporin also contain a beta-lactam ring. तो नेक्स्ट जो होता है पेनिसिलिन में, हम क्या देख सकते हैं, हर एक पेनिसिलिन में एक बीटा लैक्टेटम रिंग होता है, ठीक है, जिसके आसपास उसका केमिकल स्ट्रक्चर बेस्ड होता है उस कॉम्पोजिशन का, जैसे लाइक पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, कोई भी है। ओके, all penicillin contains a beta-lactam ring in their structure, which is responsible for the antibacterial activities. Okay, तो जो ये बीटा लैक्टेटम रिंग है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज है ना हमारे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। नाउ सिफेलोस्पोरिन आल्सो कंटेन अ बीटा लैक्टेटम रिंग। अब सिफेलोस्पोरिन भी क्या कंटेन करता है, बीटा लैक्टेटम रिंग कंटेन करता है। तो इसका मतलब क्या है कि सिफेलोस्पोरिन इज आल्सो having beta lactam ring and is responsible for antibacterial activity. Next is penicillin mechanism of action. Now what penicillin does, penicillin कैसे work करता है, let's see. Penicillin inhibits the synthesis of bacterial cell wall. If bacteria divides, that is the presence of penicillin. Okay. If the bacteria divides in the presence of penicillin, cell wall cannot be synthesized. Bacterial cells swell and burst. So पेनिसिलिन सबसे पहले तो क्या करता है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसको बनने से रोक देता है, ठीक है। और ये इस तरह से डैमेज कर देते हैं कि उस ये जो वायरस इस तरह से डैमेज कर देता है सेल को कि फिर वो सेल वॉल उसका नहीं बन सकता है। ओके, नेक्स्ट कम्स द क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन में क्या है, एसिड लेबाइल, इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन में फर्दर क्लासिफिकेशन है, पेनिसिलिन विथ नो रेजिस्टेंस ऑफ
penicillinase enzyme. So the first category is, or the first classification is penicillin with no resistance to penicillinase enzyme. First comes under this acid level and second is acid resistant. एसिड लेवल में एग्जांपल में आ गया पेनिसिलिन जी एंड एसिड रेसिस्टेंस में क्या आ गया फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन पेनिसिलिन रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिनेज एंजाइम देखो जो कैरेक्टरिस्टिक है पेनिसिलिन का वो है फर्स्ट है कि पेनिसिलिन विद नो रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिनेज एंजाइम पहला क्लासिफिकेशन में आता है कि पेनिसिलिन ऐसा पेनिसिलिन जो कि पेनिसिलिन एंजाइम से खत्म ना हो या खराब ना हो ठीक है उसका रेजिस्टेंस है पावर है नाउ द पेनिसिलिन रेजिस्टेंट to penicillin enzyme. So this is all about classification of penicillin. Now, benzyl penicillin G. Benzyl penicillin G. What is benzyl penicillin G? It is a it is an acid labile penicillin that is destroyed by gastric content. तो इसमें आप देखोगे जो बेंजाइल पेनिसिलिन बेंजाइल पेनिसिलिन पेनिसिलिन जी है वो क्या करता है एसिड बेस पेनिसिलिन है और ये मोस्टली जो बेंजाइल पेनिसिलिन है वो कैसे देते हैं आईएम के थ्रू देते हैं ठीक है और इसका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत अच्छा है बहुत क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में भी ये स्प्रेड हो जाता है ठीक है पहले तो सेल में होगा फिर एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल में भी आ सकता है इसलिए इट इज मस्ट कि टाइम से हम ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दें इट इज rapidly excreted through the kidney mainly the tubular secretion ये क्या है किडनी से बहुत इजीली रिलीज हो जाता है it has short life or lifespan you can say 30 minutes जी हाफ टाइम क्या है 30 मिनट्स तो बेंजाइल पेनिसिलिन पेनिसिलिन आपने लिया और 30 मिनट के अंदर में ये आपकी बॉडी से निकलना भी शुरू हो जाएगा या निकल जाएगा तो दिस इज अबाउट बेंजाइल पेनिसिलिन जी तो in next class we will see further and for this class this much is I guess sufficient first let me take your attendance कल या नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन
and ethane. No, sorry, not ethane. Pen, 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 penicillin, methicillin, fluoxetine, ampicillin, beca, ampicillin, halampicillin, ampicillin, amoxicillin, carbanicillin, azlocillin, and meslocillin. And finally, we will see the adverse reaction of penicillin. Okay, so this is it for today's class.